Electricity bills. Like a lot of our monthly expenses, the number on this bill too seems to be growing bigger and bigger. But what if I told you that your next electricity bill could actually see a reduction? How? Well, that's what our guest today is going to tell us. Bharat Rangawat, the co-founder of Enlog. His startup is helping thousands of people and businesses slash their energy bills while saving the planet at the same time. This kind of a energy assistant for your home. The AI part is doing everything for you to decrease your electricity bill. I'm Avni Raja, and you're watching Startup to Scale Up. If you've ever wished for an easier way to manage your energy usage and reduce your electricity bills, then this episode is a must-watch for you. Bharat, welcome to the show, and thank you so much for joining us. Let me straight off ask you, electricity bills are something that every household usually dreads and hopes that there was some way to reduce that cost. But for you, what was the trigger point that made you think you wanted to build Enlog? Thanks a lot, Avni, for having me at Editor G. So, let me start with the problem first, like why the bill are rising more and all. So we should know the problem first, right? Why actually this thing is happening, right? Why the electricity bill are getting more higher? It can be because of the unit rates, but before that I would like to tell you that we have surveyed around 1,000 plus household, offices, hotels, malls, factories, and we found that there are three main reasons why people are getting higher electricity bill. The number one thing is the electricity wastage, and which comes under three prospects. One is faulty appliances, which we call them appliances which are consuming more electricity than their actual consumption, right? Then we have these unattended appliances which we forgot to turn off. That is the behavior issue which we say. And the third one is the current leakage thing. The thing is, these two problem, like this faulty appliances and the current leakage thing, is too much technical that normal people cannot understand it, right? How this thing is happening. या तो हमें इसको सोल्व करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को चेक कराना पड़ेगा डिटेल में, right? So this is not possible for a household or to smaller level hotels, offices. Big companies like malls, factories, they are paying higher amount on electricity bill. That's where they have a proper electrical teams to see this. So we have catered this part that by reducing the wastages through some IoT devices and apps and dashboard will help you to decrease these wastages and make it more automated the process, ताकि किसी भी यूजर को इंटरेक्ट ना करना पड़े डैशबोर्ड एंड ऐप के साथ, राइट? सो आई वाज इन कॉलेज एंड बीटेक में हम लोग मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनाते थे, एंड एट द फाइनल ईयर वी थॉट कि भी कुछ ऐसा बनाएंगे लाइक जो मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में याद रहेगा सभी को. सो वी चोज कि भी हेलीकॉप्टर बनाएंगे, राइट? So I went to HAL, Hindustan Aeronautic Limited in Bengaluru, to study about the things, how these aeronautic things work on. And we got a letter from HAL that you are visiting us on this particular dates. And that letter got couriered at my home, and my father saw that letter कि भी मैं HAL गया हूँ देखने. So I came back from HAL, and my father told me that, are you building a helicopter? I was like, yes. And he told me कि देखो, if you want to build something, कुछ innovation करना चाहते हो, I think you should do that really impact the human life. Humanity पे impact होना चाहिए. And I randomly asked कि क्या? He said कि देखो helicopter तो already बने हुए हैं, right? And कोई और भी बना लेगा, इसमें आप कुछ impact नहीं लेके आ रहे हो. I think you should work on this electricity part because there are lot of household. It is the story is about back then in 2013, 2014. राइट? सो इलेक्ट्रिसिटी का इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कट लगते हैं, तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पार्ट, जहां से हम लोग ताकि सभी को एक्सेसिबिलिटी मिले इलेक्ट्रिसिटी की 24/7. सो मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, एंड आई फाउंड दैट कि भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ना अल्टरनेटिव विच जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इफिशिएंसी का गैप है. एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर. सो देन
at the same time we were working on, we were checking the insights of customer, how they are using electricity. At the time we were doing some survey, and that's where we found कि यार देखो, जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का है एक पार्ट, बट जनरेशन से क्या कर, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, राइट, Hmm. बट Hmm. प्रॉब्लम को ही जब तक हम लोग सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, लाइक द वे यूजर्स आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी, आप कितना भी जनरेशन कर लो इलेक्ट्रिसिटी का, वो सॉर्ट आउट नहीं होगा. लेट्स सपोज इंडिया इज, लेट्स सपोज जनरेटिंग 4 to 5 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी इन ए ईयर, और वो पूरा पूरा जितना जनरेशन है उतना डिमांड है इंडिया के पास में, राइट. Right. स्टिल प्रॉब्लम वहीं की वहीं फिक्स्ड है. गवर्नमेंट ने बहुत कैंपेन्स लॉन्च किए कि आप अपना दिन में लाइट बंद कर दीजिए या ये चीज बंद Hmm. कर दीजिए. Hmm. Still that thing Hmm. has not been sorted out. एलईडी की Right. Right. टीवी, एलईडी टीवी आया, एलईडी लाइट्स आई, बट उनसे उन्होंने वेस्टेज कम करने की कोशिश की, बट जो बिहेवियरल चेंज है उसको कोई भी शिफ्ट नहीं कर पाया. That's Hmm. how this whole thing started. And in 2019 we did this survey, and it takes 2.5 years to build this product. We tested this, we give it to the customer, we run the pilot test for a year, and we got so many feedbacks from the customer. Right, right. And So, how Bharat, we tell us how the technology actually works. How does one use it to save electricity? What is the process? first step is to identify the fault, identify the thing कि भी fault है या नहीं है, और fault है तो किस टाइप के fault हैं. First is identification stage. So for that we install our product. Like जैसे ये स्टार्ट हुआ था तो हम लोग ने सिर्फ मॉनिटरिंग की डिवाइसेस लगाई थी कि मॉनिटर करके देंगे हम आपके घर में या आपके प्रीमाइस में, बताएंगे आपका कौन सा फॉल्ट है, राइट. And then basis on the customer feedback we take actionable things and all. So now the product is like, you just install the product. In just next 1 hour it'll tell you how many faulty appliances are at their unit premises. And third Hmm. step is how to regulate those faulty appliances to decrease the wastage Okay. without you as sitting on the dashboard and apps, right? Because again, if मैं आपको notification, like that's what we started in 2022 and 2023, we start sending a notification to the customer that this your AC is consuming more electricity, your fan is consuming more electricity, take this action. आपके फोन में इतना नोटिफिकेशन आता है ना, स्विगी, जोमेटो, फेसबुक, Hmm, hmm, इंस्टाग्राम का, hmm. यू जस्ट इग्नोर दैट. और Right. हमारा उनमें से कुछ एक नोटिफिकेशन होते हैं तो लोग उस पे एक्शन नहीं लेते. दैट्स वेयर वी कम अप विद दिस फीचर कि यू जस्ट इंस्टॉल द डिवाइस Hmm. and let the device handle this entire electrical things for you. So it's kind of a energy assistant for your home, Right. for your premise, where you are not doing anything, that device and the AI part is doing everything for you to decrease your electricity Right. bill. Right. And what about the cost of this device? So, if I want to, for example, install it in my home, what does the process look like? How difficult is it? How big is the device? What can you tell us? No, the device is just a router kind of thing only. जितना Okay. router होता है ना, Wi-Fi router उतना ही Hmm. है. Hmm. And Acha. so we have variants from starting from 1,000 to 1 lakh, depending upon the premise size, depending upon the appliances. For a household, it comes around 10 to 12,000 only. Like if हम लोग AC, geyser या kitchen को cover कर रहे हैं, because Hmm. 75% household consumption comes from AC, Hmm. geyser and kitchen. Water Right. motors, fridge, oven, यहाँ Right. से आता है. So we need to cater that part only. So उसके लिए आपका कॉस्ट एवरेजली 5 to 12,000 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग द हाउस इज एंड हाउ मेनी अप्लायंसेस आर देयर एट योर होम. Hmm. एंड एवरेज जो हम लोग रिडक्शन लेके चलते हैं, इट्स 16% से लेके 25%, 30%. कई कई लाइक हाउस होल्ड्स में या होटल्स में हमने 50 to 65% तक रिडक्शन किया है. Okay. Electricity bill mein. Yes, and Okay. that electricity bill is one part. There हाँ. are three things actually. Electricity bill तो हमें एकदम से दिख जाता है कि पिछले जी. महीने मेरा इतना था, इस महीने इतना हुआ. Second thing is appliance efficiency as well, right? Hmm. Hmm. एक अप्लायंस आपका, लेट्स सपोज कोई एसी है, वो पहले आपका 8 घंटे चल रहा था दिन के अंदर, राइट. एंड वी हैव रिड्यूस द आवर्स ऑफ दैट कि भी हम जब हमने डिवाइस लगाया या प्रोडक्ट लगाया उसके बाद में उसका वर्किंग आवर्स भी हमने रिड्यूस किए. दैट्स हाउ द कंजप्शन डिक्रीजेस, राइट. Right. Right. वर्किंग आवर्स इंक्रीज करेंगे तो एक लॉन्गर रन में अप्लायंस थोड़ा और ज्यादा टाइम तक चलेगा. And
Third one is this climate tech thing, right? If you are decreasing the electricity consumption, you are directly impacting on the client, because if we are in Delhi NCR or some part of, because 53% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है और जनरेशन है वो इट इज हैपनिंग फ्रॉम कोल, Right, right? right. Every one unit which we are consuming, we are emitting 950 grams of carbon emission Hmm. on every Hmm. single unit. So you are not just saving the electricity bill, you are saving the environment, you are increasing the appliance efficiency. Apart from that, we have added some protection features as well, wherein short circuit protection, overload protection, voltage fluctuation protection. That is also Hmm. there. Right. So once you install the router, you start getting these notifications that this particular gadget is not functioning properly, or this particular appliance is, not good enough at the moment. Then what happens? How does the router then regulate things or ask you? Because sometimes you may need somebody to come in, an electrician, to fix something. So how Yeah. does that whole process work? Okay, so just after, as I told you, just after installing the appliances, it will tell you these appliances are faulty, Right. and will tell you like at what extent they are faulty, Hmm. राइट? कि लाइक आपका एसी खराब है तो एसी कितने लेवल तक का खराब है, कि सिर्फ उसका कंप्रेसर में इश्यू है या कैपेसिटर में इश्यू है या उसके जो फैन है उसमें इश्यू है. नाउ वी आर प्रेडिक्टिंग दीज पर्टिकुलर फॉल्ट ऑल्सो, राइट? कि पर्टिकुलरली आपको इफ इलेक्ट्रिशियन की किसी को विजिट करानी है तो आप वो सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट ही चेंज कर देगा, राइट? Right. फॉर Hmm. एग्जाम्पल लेट्स सपोज यू आर यूजिंग एसी जिसको हमने बताया ये फॉल्टी है. फॉर एग्जाम्पल वो 2000 वोट उसको कंज्यूम करना चाहिए था, बट वो 2200 वोट या 2500 वोट कंज्यूम करने लगा. मतलब एक घंटे में जिसको 2 यूनिट कंज्यूम करने चाहिए थी वहां पे वो 2 या 2.5 यूनिट कंज्यूम, 2.5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है. सो वट वी डू इज वी स्टार्ट रेगुलेटिंग दैट अप्लायंस, बिकॉज डिवाइस इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है एसी कब स्टार्ट हुआ, कब उसका फैन स्टार्ट हुआ, कब उसका कंप्रेसर स्टार्ट हुआ. तो Hmm. उसको सिर्फ कंप्रेसर को ही रेगुलेट कराना है, कि वो लेट्स सपोज पहले एक घंटे में एक बार कट ऑफ कर रहा था, अब वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में मल्टीपल बार कट ऑफ करेगा, ताकि आपका जो वर्किंग आवर्स है उस पर्टिकुलर अप्लायंस के उसको रिड्यूस कर सकें हम लोग, Okay. विदाउट गेटिंग दैट पर्टिकुलर अप्लायंस रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड. दैट इज फर्स्ट Hmm. स्टेप. जहां से हम Hmm. आपकी लेट्स सपोज पहले यदि आपकी 15 यूनिट आ रही थी, वहां से उसको हम 12 या 13 यूनिट पे लेके आएंगे. एंड उसके बाद में ज्यादा सेविंग चाहिए जहां पे कस्टमर को लगता है कि हाँ अभी मेरा इतना कंजप्शन रिड्यूस हुआ है, राइट? दैट्स वेयर वी से कि अभी आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के इस पर्टिकुलर अप्लायंस का ये पर्टिकुलर पार्ट आप चेंज करवा सकते हो. यू कैन डू अर्बन Okay. क्लैप, जस्ट Right. जस्ट डायल लिस्ट ऑफ थिंग्स. यस. Yes, yes. So Bharat, can you tell us a little bit more about, the numbers, whatever numbers you can share with us at this point in time, in terms of whether it's funding, whether it's how much sales have you done, that sort of thing? So in 2019 we started, and it takes 2 years to develop this product. So 2021 में हमने इसका फर्स्ट पायलट लॉन्च किया था, जिसमें हम Hmm. लोग 50 डिवाइसेस, फर्स्ट 50 जो हमारे पर्सोनास जिसको हम बोलते हैं, उनको Hmm. उनके घर पे या उनके ऑफिस में हम लोग डिप्लॉय किए थे. और 1 साल तक वो प्रोडक्ट चला था, एंड वी फाउंड कि भी इतना इतना हम लोगों ने एवरेजली 15-16% उनका सेविंग करा है. एंड देन इन 2022 हमने कमर्शलाइज किया इस प्रोडक्ट को, and Hmm. that's where we got our first funding in July 2022. We raised 1 CR in July 2022 from angel investors, and in that particular year we did a sale of 17 lakh only, 2022 and 2023. And in 2023 to 2024 we did 2.2 CR, and and just we got the funding in October, 1.75 CR, and currently we are doing 1.25 CR month. Okay. And so by Right. end of this year, we'll close it 12 to 13 crore rupees. Yeah. And going forward, what is the plan? What is the expansion plan? Any kind of targets that you have set for yourself? Yeah, so first thing is दो चीजें हैं. एक तो हमें एक्सपेंड करना है. सो वी आर ऑलरेडी एक्सपेंडेड इनटू बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर. वी आर बेस्ड आउट ऑफ. एंड सो जो हमारी रिसेंट फंडिंग भी आई है उसमें भी हम लोग हमारे ऑपरेशंस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द R&D पार्ट ऑल्सो. सो
हाउसहोल्ड हम लोग 2022 और 2023 में कर रहे थे. नाउ वी हैव पिवेटेड आवरसेल्फ बिकॉज हाउसहोल्ड अभी रेडी नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. दे रिक्वायर सो मच अभी एजुकेशन की जरूरत है. सो आई कैन नॉट स्पेंड सो मच मनी इनटू द मार्केटिंग. सो वी आर करंटली helping hospitality, PGs, hotels, restaurants, and we are helping these guys to save on the electricity bill. Apart from Hmm. that, we are also doing with pilot projects with commercial buildings and factories as well. सो Hmm. नेक्स्ट ईयर का प्लान हमारा यही है कि अभी इस साल हम लोग 12-13 करोड़ पे क्लोज करेंगे. नेक्स्ट ईयर हम लोग 40-45 करोड़ के अराउंड क्लोज करेंगे. Going forward, let's say in the next 5 to 10 years, where do you see Enlog positioned in this entire space of energy management? First step was to build this device. We'll come up with more product for household offices and all. And simultaneously we are developing our own SoCs chips for multiple appliance manufacturers and for smart meter things, where our chips only would be more intelligent. We are just decreasing the size of our product. So we Right. started with the router. Now we are in upcoming 1 month or 2 months, we are introducing our another product, which would be just 40, that much only in length and breadth. So around 40 mm product. And the next target after 5 to 10 years is to decrease the size. So it should be everywhere. So every Right. single household, every single offices, every single hotel, every person would have this kind of product wherein they are not just thinking about how to use electricity. The device and product itself will analyze each and everything, and they'll help you to not only reducing your electricity bill but optimizing all the appliances as well. Okay. So, Bharat, before we go to the rapid fire round, I wanted to ask you one thing that you'd like our viewers to take away from this entire conversation about energy management, about sustainability, something that they can reflect on and think about and maybe act on from today, irrespective of whether or not they have a tech gadget like this to help with the energy management. I think they should be more careful on the behavior side, right? If like जैसे हम बोलते हैं कि कोई अप्लायंस है उसको ऑन ऑफ मतलब खुला मत छोड़ो. आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज दैट ओनली. Hmm. एंड second thing is, if we can do a regular checkup of appliances in just a quarter, in a quarter or 6 month of time, जैसे रेगुलर कैचअप. क्योंकि सिर्फ अप्लायंसेस खराब होना इशू नहीं है या बिल आना इशू नहीं है. प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा मेजर इशू होता है, जहाँ पे ये फायर हजार या शॉर्ट सर्किट जो होते हैं ना, ये भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं. इफ वी डोंट डू द रेगुलर चेकअप, चाहे 6 महीने में एक बार भी चेकअप हो गया ना, सो विल Hmm. बी ऑन द गुड सिचुएशन, नोट एट द वर्स्ट. सो एक छह Right. महीने में चाहे एक बार चेकअप करवाओ किसी भी इलेक्ट्रिशियन से. डिटेल चेकअप करवा लीजिए अपने घर का या प्रीमाइस का, ताकि ऐसी चीजें जो प्रोटेक्शन वाली चीजें वो सेफ रहें आपके घर की, नो जस्ट द वेस्टेज पार्ट. Okay. All right. So let's get to the rapid fire round. I'll ask you short, quick questions and quick answers from you as well. या. Nlog in 3 words. एनर्जी इंटेलिजेंस. Okay. One habit that people can adopt today to save energy. Just turn off, like TV and TV and AC when they are not in use, not just from the remote but from the main switchboard. Okay. Yeah. What is your favorite feature about the SmiFi? That I don't need to sit on the apps and dashboard. That is the important feature, because being in perspective as a businessman or a working professional, uh, we don't have time, right, to see all the things on the phone and apps. And that's what the feature I like the most, because this product is installed in my home as well, right? Okay. And I'm there in the office and this thing is managing my home if I'm not there. And Okay. that's the best feature which I like about it. Yeah. All right. What's the next big feature, if you can share with us, that's coming on SmiFi? The sizes are going like, one is the size. The size is going to be more in smaller segment, smaller size. Second, it will
actuating your AC and fan speed. Okay. What's one misconception people have about energy saving technologies? कि इफ अप्लायंस जब तक चल रहा है तो वो बिल्कुल सही चल रहा है, जिस दिन एक्चुअली खराब होगा तो वो खराब हुआ है, मतलब बंद हो गया तो वो खराब हो गया। बट उसके जो बीच का टाइम है, उसी टाइम पे सब गड़बड़ होती है कि जब वो जिस दिन आप उसको परचेज करके लेके आए और जिस दिन वो खराब हुआ, उसके बीच में जो उसने अपने पैटर्न्स चेंज किए हैं, दैट्स वेयर ऑल द थिंग इज। Okay. And finally, who's been your inspiration in this entire journey of entrepreneurship? Okay, so my father only inspired me to go into this direction where my work is impacting the humanity, and I have seen the way we are building products and with the way we are decreasing the prices and adding more functionality into it. That's what I have learned from Elon Musk, that go with the basic thing and solve those only, and you come up with very good product if we just focus on the basic thing only. All right, we leave it there, Bharat. Thank you so much for joining us with your journey and your story, and wishing you all the very best. Thank you, Avni. Thank you for having me. With that, it's a wrap on this episode of Startup to Scale Up. We hope you enjoyed this conversation and picked up some important tips on how you can manage your energy usage. Let us know in the comments below. And while you're at it, don't forget to subscribe to Business Hook so you don't miss our next episode packed with more strategies and stories to fuel your entrepreneurship journey.